Hi guys, once again a very good morning to all of you. I'm Sabagani, your English faculty at Hollywood. I hope I'm audible and visible to you all. एक बार फटाफट से कंफर्म कर दीजिए. Good morning everyone. Good morning सौरभ, मधुरिमा, हुसैन, Invincible, अपूर्व, अंशिता, मधुरिमा. Good morning everyone. So फटाफट से कंफर्म करिए so that we can quickly start today's session. Okay. Good morning Pragya. Good morning everyone guys. अगर आपके पास good vibes का match Okay. So I hope I'm audible and visible to you all. As you can say, see, this is going to be a rapid fire session where you will be given, it is going to be a poll session. Okay. ये basically poll session होने वाला है. 1 second guys. Let me share this with others also. Just give me 1 second. Yeah. So this is going to be a poll session for each question because this is vocab only. So simply you have to go through the word. But here you will get idioms also. You will get phrasal verbs also. And you will get vocabs also, sino and anto also, synonyms, antonyms, everything you will get. Okay. So you have to go through the directions very carefully. Directions बहुत ध्यान से देखना है कि आपका synonym पूछा है, antonym पूछा है. Basically idioms and phrases are also there, phrasal verbs are also there. Okay. So you have to give the meaning of opposite. Only these two things you have to do. Okay. So for every second, I guess 20, 15 to 20 seconds you will get, not more than that. So Manju sir is there for with us. He will assist us in poll session. So please make sure that you mark each and every one. It is important that you have to mark your answers. And within 1 minute, I will give the meanings of all the words and then we will proceed. Okay. So the process is clear to everyone. Good morning, Rohit. Good morning, everyone. सबको प्रोसेस क्लियर हो गया. करना क्या है, आपको हर वर्ड क्वेश्चन के लिए यू विल गेट 15 to 20 seconds. Maximum 20 seconds you will get. Simply you have to see the word and you have to mark your answers. Okay. Remember, words will be very close as you get in your banking or other examinations. जैसे आपको banking examination में मिलते हैं वैसे ही words हैं. But please, those who are live, जितने लोग भी session को देख रहे हैं, you all should mark your answers in full. कोई भी अलग से इसमें chat में आंसर नहीं लिखेगा. Don't write your options in the chat. Mark your answers in the poll. Okay. So we will start today's session. बट बिफोर स्टार्टिंग इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जिन लोगों ने, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विद मैक्सिमम. सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. ओके. एंड अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड द ऐप ऑल्सो. क्लियर एवरीवन? हाँ, कर दिया तो दैट इज गुड. आई एम गुड हुसैन. So please download our Ollywood app also. Subscribe to our YT channel, like this session and share this session. Maximum लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे तो अच्छा रहेगा. Okay. So I hope everyone is ready. Give me a thumbs up so that we can start today's session. Maximum participation I want today. Maximum participation. Vocabs will be similar and see, I will give you the answer of each word. हर word का मैं answer दूंगी. Okay. But within one time we have to, within time only, within 1 minute we have to move to next word. Okay. So the first word is before you. Manju sir, please create poll for this word. And please give the timing of 20 seconds only. Okay, not more than 20 seconds. So please create the poll for first question. Quickly guys, mark your answers. Within 20 seconds. Timing का ध्यान रखिएगा. Only 23 votes till now. I want maximum. Those who are watching live, please give your answers. वो कैप तो सबको पता होती है ना. नहीं पता तो भी आंसर दीजिए. I will get to know कि आपको कितने सारे words पता हैं. Okay. दिस इज अ वर्ड जो बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है. बहुत बार आप इसको फारसी वगैरह में देखेंगे. डायरेक्ट मीनिंग में भी दिस वर्ड इज आस्क्ड. Manju sir, don't give more than 20 seconds. 20 seconds are more than enough for vocab questions. Poll complete, 61 votes. 49% have marked A
39% B. See, commensurate word means proportionate, equal amount of something, that is called commensurate. Proportionate, we say कि commensurate returns we say. So commensurate का commencement से relation नहीं, commencement you know we call to starting. Commencement का मतलब होता है start something. Cessation means end something. So here the correct answer is B, proportionate. It means equal amount of something. किसी भी चीज का equal amount, that is called commensurate. Yes. So it is what B is the correct answer. We got only B, 39% right answer. Only 39%. The words that I have taken today, letters are not clear. Study good. एक बार अपना resolution increase करिए. देखिए ये जो words मैंने लिए हैं ये बहुत important words हैं, highly important words I have taken. And besides that, you will get options very close and very similar. So please go through that options carefully. Okay. और अगर किसी को स्लाइड्स प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो एक बार आप अपना रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन. मंजू सर प्लीज क्रिएट दिस पोल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Quickly guys. Now this is simple. I want maximum accuracy in this. ये तो सब लोग कर सकते हैं. Less. What is the डायरेक्शंस भी ध्यान से पढ़िएगा. सिनोनिम पूछा या एंटोनिम, बीच बीच में यू कैन गेट एंटोनिम आल्सो. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. Only 48 words till now. 10 seconds sufficient, Neeraj, but still since you have to go through the direction also, so I have given, safer side I have given 20 seconds, okay? 67 votes, 59% have given unite, that is correct. Unite is the correct word. Coerce basically we call to unite, okay? And the meaning of the word coerce is to force. This word means force someone, compel someone. देखिए ये मत देखिएगा कि coalesce and coerce match कर रहे हैं तो it means they are the synonym. No, coalition से ही word बना है. Yes, coalition we call to that agreement, okay, government. So it means unite, agree, that is called coalesce. Okay, yes. So and coerce means we call to force or compel. किसी को force करना, किसी को compel करना, that is called coerce. Correct. Now next word. Manju sir, please create poll for next question. Remember these words, repeat these words, okay? तभी याद रहेगा ये सारे words. आपको लगेगा ये word तो पहले कर चुके हैं, but that is different. Hurry up, guys. Commiserate. Very good word, commiserate. Commensurate you saw, now this is commiserate. मिलता जुलता word है. मनीष अगर vocab याद नहीं रखेंगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे बढ़ेगा. vocab अगर बहुत अच्छे से क्लियर है, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ईच सिमिलर वर्ड. हर सिमिलर वर्ड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. 71 votes, 38% are saying B. Chintu, don't write answer here. Commiserate we call to sympathize with someone, to express your sympathy. देखिए अभी आपने वर्ड जो देखा था, that we saw the word commensurate. Commensurate and commiserate ये मिलते जुलते वर्ड हैं, but they are completely different. बिल्कुल अलग है. मैक्सिमम के आंसर गलत है. So condone का बेसिकली मतलब होता है forgive. Condone basically we call to forgive. Commiserate means to express sympathy. किसी के लिए आप अपनी sympathy express कर रहे हैं, that is called commiserate. So condole is the synonym of, condole का मतलब क्या होता है? To sympathize, to condole, condolence देना. So A is the correct answer. Apathy is antonym. Apathy is the antonym of sympathy. एपैथी क्या हो जाता है? इट इज एंटोनिम ऑफ सिंपैथी. तो अगर अपोजिट पूछता तो आप एपैथी लगाते हैं. इट इज अपोजिट ऑफ कमिसरेट, बट इफ यू टॉक अबाउट सिनोनिम,
So it is what? Condole, to express sorry, to sympathize with someone. किसी के साथ सहानुभूति express करना. Clear everyone? I hope you will remember this difference. Apathy is opposite. Sympathy is what? Synonym. Nehal, I will tell you my this. Commensurate we call to proportionate. Now, Manju sir, please create a poll for next question. Yes, condole, condone. That is why I told you options are very similar. Options बहुत similar हैं. So please go through the options carefully. Okay. Next question. इसमें तो 100% accuracy चाहिए. I want 100% accuracy in this question. Quickly. Manju sir, only 20 seconds. 55. Why others are not voting? 30% are saying D. It means आपका vocab का हाल. Cupidity. You know, cupidity we call to avarice. Avarice basically we call to greed. Avarice का मतलब होता है greed, लालच. Okay. So avarice and cupidity, these two are synonym. Cupidity also we call to लालच. अब देखिए आप brevity we call to briefness. Brevity we call to briefness. Avaricious is a word. Avaricious word we use for greedy. ये जो word होता है avaricious, rapacious, avaricious, rapacious, all these words we use for greedy. जो बहुत ज्यादा greedy होता है. Okay. And this voracious we call voracious also you can say avaricious, rapacious, voracious. All these words we use for greedy. Remember this thing. Okay. And we have a word capricious. कैप्रिशियस वर्ड वी यूज फॉर फिकल कि जो फिकल का मतलब होता है कि जो कहीं पर फिक्स नहीं होता है, जो अपने माइंड को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है. सो दैट इज कॉल्ड कैप्रिशियस. मर्सिनरी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. यस. सो द करेक्ट सिनोनिम इज क्यूपिडिटी. एवरेज एंड क्यूपिडिटी, दीज टू आर सिनोनिम. ओके. यस. कैप्रिशियस वी कॉल टू फिकल माइंडेड कि जो बार बार अपना माइंड अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है. दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएट. करेक्ट. दैट इज कॉल्ड. ओके. Temerity we call to boldness, audacity. Temerity is a noun. This we use for boldness, audacity. Okay, audacity, boldness. That is called temerity. So yes, boldness it is noun. So temerity for boldness. Courageous is a positive word, but boldness is a bit negative word. ये basically मतलब किसी को boldness is what a bit negative word. So that is called this temerity. Yes, capricious के लिए you have so many words. Yes, capricious के लिए you can use so many words. That is whimsical also. So I hope all the words are clear. Next, Manju sir, please create poll for fortitude is courage. Fortitude is courage and bravery. That is a positive word. Okay. वो उसी से related है. Next question, guys, quickly. This is also a good word. Dovetail. Quickly, guys, hurry up, mark your answers. It is a good word and options are also good. Let me see who gives the. But guys, those who are present, those who are live, please mark your answers ना. गलत हो जाएगा तो इसमें तो पता भी नहीं चल रहा कि आप सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं. Mark your answers. At least I will be able to know कि आपको कितने words में confusion है. 36% B, 27% C,
A 19%, D 16%. 73 votes we have. Yes, dovetail basically we call to joint. बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी फिट इन हो जाए, कहीं पर भी फिक्स हो जाए, फिट इन हो जाए, ओके, समथिंग दैट फिट्स एवरीवेयर, कहीं पर भी वो फिट हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड डवटेल ज्वाइंट। यस करेक्ट सुरेश। यहाँ पर देखिए ऑप्शन एग्जैक्ट यू डिडंट गेट द वर्ड ज्वाइंट, बट कहीं ना कहीं ज्वाइंट आपका एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो अनुग्रह, आई हैव टेकन द वर्ड, आई हैव चोजन सच वर्ड्स की, अच्छे वर्ड्स मैंने चूज किए हैं। वो वर्ड्स का क्या फायदा जो आपको पहले से पता है। I have basically chosen such word that can teach you something. तो ये जो है बेसिकली मीक, मीक का मतलब होता है सबमिसिव, जो बहुत हम्बल है, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव मीक। रिकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, रिकॉर्ड यू नो एग्रीमेंट। तो डव टूल देखिए, अगर आप कहीं पर भी फिट हो रहे हैं, इट मींस यू आर इन एग्रीमेंट विथ एवरीथिंग, आप उस पर्सन से एग्रीमेंट में हैं, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डव टेल, सो इट विल बी सी। एक हमारा वुडन ब्लॉक्स वगैरह आता था ना कि जिसको उसमें फिक्स कर दीजिए तो वो फिक्स हो जाता था, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड डवटेल। क्लियर एवरीवन। अपोजिट अगर पूछता तो आप डिफर लगा देते, अगर इसका अपोजिट पूछता तो आप डिफर लगा देते। यस इन अकॉर्ड विथ, सो मीक, यस सबमिसिव, humble, all these shy, all these are the synonyms, okay. yes gentle also, meek के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, humble, shy, all these are meek, okay. Saurabh, read the directions carefully. Opposite also you will get. को opposite भी मिलेगा. Okay. So next question. Manju sir, please create this poll for next question. Please create poll quickly, guys. Convoluted. एक बार डायरेक्शन जरूर ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, पता चला बीच में अपोजिट आ गया तो सबके गलत हो जाएंगे। Convoluted. Convoluted. Only 47 votes till now. You are getting sufficient time so that you can see each and every option. Very good. 71 votes we have. A 53%. Good. Well done, guys. Well done. Convoluted basically we call to something that is very complex, extremely difficult. Okay. So extremely difficult, complex, that is the meaning of convoluted. So the answer will be yes, complicated. Answer will be what? Why your answer is not getting into poll? Can't say. Can't say. So convoluted basically we call to something that is complex, extremely difficult, that is called this. Okay. So A is the correct answer, and other words I hope you don't have any. Suresh, no idea. I will have to check this. पोल दिख नहीं रहा, क्यों? पोल क्रिएट हो रहा तो क्यों नहीं दिख रहा? मंजू सर विल चेक दिस, ओके। सो मंजू सर प्लीज क्रिएट पोल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए ना, एक बार जिसको प्रॉब्लम हो रही, पोल वगैरह अगर नहीं दिख रहा, आंसर्स नहीं मार्क हो रहे, तो प्लीज रिज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर ब्यूटीफुल वर्ड, अनदर ब्यूटीफुल वर्ड, प्रिक्लूड इट इज। ये जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं ना, जो आप सुन रखे होते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं एग्जाम में, बिकॉज ये वर्ड सिमिलर साउंडिंग वर्ड से आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सो इट इज प्रिक्लूड, गो थ्रू दिस वर्ड केयरफुली, ध्यान से देखिएगा, प्रिक्लूड लिखा हुआ है। Please increase your voting. If you are facing some tech issue, that is another thing, but otherwise, those who are able to vote, please increase your voting. 74 votes. I want others also to vote. Good, 79 votes.
Quickly, guys. Very good. 81 votes. Very good. Excellent. Manju sir, only 20 seconds, not more than 20 seconds. B, 48%. Very good. Very good. 48% have marked B. So yes, preclude means not to include anything. किसी भी चीज को include नहीं करना. So that is called preclude. It means prevent something. Preclude means rule out something. Very good this Dayanidhi. So rule out something, किसी भी चीज को prevent कर देना, include नहीं कर देना. So that is called preclude. Wish you all a very happy Vishkarma Puja. Yes, today is Vishkarma Puja. So wish you all a very happy Vishkarma Puja. So prevent is the meaning. Now see, you might get the meaning, or you might get confused between preclude and prelude. See, prelude basically we call to beginning of some event. कि कुछ event होने वाला, उसकी जो beginning होती है, that is called prelude. Whereas preclude we call to prevent something from happening. Clear everyone? Sonali, see again you guys are saying कि मैम most of these words you people have not heard. तो यहाँ पर ये words जो है ना, मैंने वही लिया हुआ है basically जो जनरली मतलब आपको कंफ्यूजन हो या जो आपने ना सुना हो. बेसिकली आई हैव यूज्ड दैट वर्ड ओनली. ओके. नाउ नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, प्रिक्लूड मींस नॉट इंक्लूड. सिंपल ये याद है कि इंक्लूड आपको पता है, तो प्रीक्लूड मतलब नॉट इंक्लूड एनीथिंग. So in this way you can use this word. So it means prevent something, rule out something, that is called preclude. Okay. uh, Manju sir, please create poll for next question. Sonali is very regular in 7 a.m. Session, editorial session. She is very regular. Quickly. Now this I hope you all might have heard, but go through the direction carefully before marking your answers. आंसर मार्क करने से पहले डायरेक्शन जरूर ध्यान से देखिएगा. हरी अप. Directions very important. Only for in this question I want more than 100 votes. I want more than 100 votes for this particular question. Only 59 votes till now. 62% have marked B, A. Yes. See here, opposite is asked. I hope you all might have seen कि यहाँ पर opposite meaning पूछा हुआ है. So squander basically we call to waste. Squander का basically मतलब होता है, सोनाली मैंने बोला opposite देखिए, आप डायरेक्शन देखिए. ओके. सो स्क्वेंडर बेसिकली वी कॉल टू वेस्ट समथिंग, मतलब पैसे को उड़ाना, पानी की तरह खर्च करना. ओके. सो दैट इज कॉल्ड, यस, बर्बाद कर देना. स्क्वेंडर मतलब वेस्ट, स्पेंड लैविशली कि बहुत ज्यादा खर्च करना. सो अपोजिट इट इज आस्क्ड, सो इट विल बी प्रिजर्व. Sandeep, no problem if today you are facing any issue. So you know the answer. So you can just be in the session. Okay. Spend, thrift, squander. देखिए, squander is a verb. Squander is a verb. Squanderer is a person. Squanderer we call to a person who spends lavishly. Spendthrift is what? That person कि जो बिना सोचे समझे खर्च करता है, extravagant. All these words we use for person. ये सारे वर्ड्स हम पर्सन के लिए यूज करते हैं. प्रिजर्व का मतलब होता है कि सेव करके रखना, बचा के रखना. दैट इज कॉल्ड प्रिजर्व. यस. प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, करेक्ट, दैट इज एन इडियम. सोनाली, गुड. नेक्स्ट वर्ड. मंजू सर, प्लीज क्रिएट पोल फॉर नेक्स्ट वर्ड. स्क्वांड्रल इज डिफरेंट. स्क्वांड्रल इज चीट, उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है. नेक्स्ट. देखिए, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको पैसेज वगैरह में बहुत मिलेंगे. आरसीज वगैरह में दीज वर्ड्स यू विल गेट. वर्जन. इट कैन बी अ न्यू वर्ड. वर्ड तो न्यू नहीं होगा, बट ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा के ऑप्शंस है, बट इट विल कैरी द सेम मीनिंग.
ओनली 41 वोट्स टिल नाउ, अभी तक सिर्फ 41 वोट्स हुए हैं। 60 votes, B 46%. Yes, majority is correct. Yes, majority is correct. Subversion basically we call to what? Weaken. Okay, undermine the power. किसी भी power को underestimate करना, undermine करना, so that is called, yes. So undermine is called subversion. Undermine the power of something, undermine the authority of something, that is called. Okay, so that is the meaning of the word subversion. Okay. ये किस पे डिस्कशन हो रहा? बॉयज ऑल्सो डू दैट, गर्ल्स ऑल्सो डू दैट। अच्छा, गर्ल्स बहुत खर्च करवाती हैं। ओ, सो सबवर्जन वी कॉल टू डिस्टेबलाइजेशन, सिंपल। यस, प्ले डाउन, अंडरमाइन द पावर, डिस्टेबलाइजेशन, सो ऑल दीज आर सिनोनिम्स। ओके, sanity, you know, sanity you say sense, sensible, your senses, that is called sanity. Okay, next, Manju sir, please create poll for next word quickly. Concentrate on vocabs, this vocabs guys. ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबको पता होना चाहिए। आई वॉन्ट 100% एक्यूरेसी इन दिस वर्ड। एटलीस्ट एक वर्ड ऐसा मिले जहां पर 100% एक्यूरेसी हो। आई एम वेटिंग फॉर दैट वर्ड वेयर आई कैन गेट 100% एक्यूरेसी। Ubiquitous is the word, and a very important word for every competitive examination. It is very, very important word. 72 votes. I want more than 100 votes, and with 100% accuracy. Ubiquitous. 69% एक्यूरेसी ओनली। देखिए, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना कि अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट एसएससी और बैंकिंग, दीज आर द वर्ड्स दैट हैव बीन आस्क्ड ऑफन। ये बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे वर्ड्स। सो यूबिक्विटस बेसिकली वी कॉल टू फाउंड एवरीवेयर, वो चीजें जिसको हिंदी में सर्वव्यापी कहते हैं, समथिंग दैट इज वेरी मच कॉमन। यस, तो सर्वव्यापी, फाउंड एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटस। Found everywhere, sarvyapi. So the synonym will be omnipresent. Omnipresent means present everywhere. Omnipresent. Quintessential अभी मैं नहीं बताऊंगी, आगे हो सकता है इससे रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए। So I won't discuss quintessential word now. आगे आपको इससे रिलेटेड वर्ड मिल सकते हैं। So yes. Next word, Manju sir, please create poll for next. Yes, omnipresent, found everywhere. Okay, ubiquitous. India's yes. Omnipotent is all powerful. Omnipotent is for all powerful. Sorry. Manju sir, please create a poll for next question. Quickly. Congenial. Read the direction. Again, I'm telling you, read the direction. Go through the direction. Directions जरूर ध्यान से देखिए। Omnipotent, I told Suresh, that is all powerful, almighty, all powerful. अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ना वो कैब की मैं स्लाइड पहले शेयर कर दूंगी, आप लोग याद करके आइएगा तब बोल दीजिएगा। ओके राजा सिंह, दैट इज अ बेटर ऑप्शन कि एटलीस्ट आप वर्ड्स याद करके देन यू विल टेक द टेस्ट। Philanthropist, no, you can't say philanthropist to San. For what you are telling, I don't know. Philanthropist, though, we call to a person who helps everyone. Altruist. 71 modes, C 42%. Maximum are incorrect. So D 42% are saying yes. Congenial, you know, person who is very much friendly. Congenial, basically, we call to a person who is very much friendly,
person who is very pleasant behavior, who has pleasant behavior. Okay, basically we use this for attitude and behavior. Like minded behavior, सारे वर्ड्स की मीनिंग डिफाइन कर रही हूँ. Like minded behavior, so all these, yes, cordial, sociable, amicable, all these you can say. Okay, amicable you can say. Okay, so all these are the synonyms. ये सारे के सारे synonyms हैं. Okay, amiable, amicable, all these are the synonyms. So now here opposite is are. Opposite is are. So opposite word आपका क्या हो जाएगा? Unpleasant. Opposite word will be unpleasant. What is the meaning of the word snug? Friendly, yes, so many words. Accord we call to agreement. See, this is rapid fire session, so फटाफट हम लोग ये करेंगे. It is rapid fire session. Okay, so accord we call to agreement. Yes. Now, Manju sir, please create poll for next question. Yes, secure. Snug we call to secure. Next. Quickly mark your answers. Quickly, guys, mark your answers. Dormant is a very common word. Dormant is a very common word. Snug basically we call to something that is warm and comfortable. Secure, you can say. Snag is different. Snug is different. SNUG. So snug basically we call to comfortable. Okay, secure. Yes. So dormant, I guess I can get 100% accuracy for this word. आंसर नहीं दीजिए. डॉर्मेंट वॉल्केनो, डॉर्मेंट अकाउंट. गिव मी द मीनिंग हियर. Easy, it is very easy. Let me see how much accuracy we get. Toshit, please don't write answer in the chat. Please mark your answers in the poll. अब देखिए यही होता है कि अगर कोई वर्ड आता है ना तो फिर आप लोगों से टॉलरेट नहीं होता है. You people don't have patience. I hope maximum have marked their answers. Still see only 57% accuracy. Still only dormant. Yes, no, it is dormant. A-N-T. Okay. So dormant basically we call to inactive. Dormant count we have, dormant volcanoes we have, dormant seeds we have, something that is inactive, inoperative, that is called dormant. So opposite पूछेगा तो active. Emaciate का मतलब होता weaken, कमजोर हो जाना. Emaciate का मतलब to become weak. कम physically weak हो जाना, कमजोर हो जाना, that is called this emaciate. Pertinent word, it is also a very important word. This means relevant. Pertinent means relevant. Okay. Now, please, it is my request, guys. Thick skin किसके लिए? Thick skin for what? Uh, uh, don't write the answer. Don't write the answer in the chat box. Okay. Yes, lazy also you can say inactive, lazy. Okay. Mark your answers in the poll if you are unable to mark. So let others mark their answer and then give the answer. Otherwise, फिर poll का कोई sense नहीं रह जाएगा. Okay. So now next question, guys. Manju sir, please create poll for next question. Pertinent के लिए we have a good word that is called germane. This is also a very good word. Quickly. Next word. Propel. Hurry up, guys. Till now we have not reached even 50 words. Now I will increase my speed. Okay. Manju sir, please give only 20 seconds for each word. Okay.
73 votes we have. A option 49%. Very good. Propel basically we call to drive something. Drive something वो गाड़ी चलाने वाला नहीं, किसी भी चीज को लीड करना. That is called propel. Okay. So drive something. Yes, propeller. Very good. आप उससे भी देख सकते हैं रॉकेट वगैरह से. That is called propeller. So drive something, something that pushes forward, जो किसी भी चीज को push forward करता है, encourage करता है, तो in that case we use. Okay. So push forward, drive something. Okay. Jettison basically yes, throw out. Jettison we use for throw out. Throwing के केस में यूज होता है. Acclimatize basically we call to accustom. किसी भी मौसम में आप अपने आप को accustom कर लेते हैं. You can say adapt. Simple you can say adapt. खुद को ढाल लेना उसके अकॉर्डिंग, so that is called acclimatize. Okay. Climate के अकॉर्डिंग खुद को adapt कर लेना, that is called acclimatize. Okay. Okay. Manju sir, if it is possible, from next time, please make poll for 15 seconds only. Adept is different thing. Adept we call to adroit. Adept का मतलब होता है skilled. Adroit, that is called adept. God of Thunder, we will see this thing. We will see this thing because I will give time for all these discussions. Adroit, yes, skilled, all these other synonyms. Manju sir, please create poll, but only 15 seconds. Quickly. Another simple word. देखिए जो सिंपल वर्ड्स हैं उसमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए. Only 15 seconds you will get, guys. So quickly mark your answers. Very good. Like this only, Manju sir. Good. Only 15 seconds you will get. 29 9 votes only. Wither basically we call to fade away. Wither का मतलब आपने फ्लावर के केस में देखा होगा मुरझा जाना. मुरझा जाना, fade away, that is called. Same meaning is asked. Opposite is bloom. Antonym is bloom. Wither का basically मतलब क्या हो जाता है? Fade हो जाना, मुरझा जाना. Okay. पोल आता है तो immediately I give you this question, Gauri. So fade is the opposite. अगर पूछता तो आप bloom करते, meaning पूछा है तो आप ये करेंगे. Wither basically we call to, yes, all these other synonyms. Withered rose we can say. Wither basically we call to postpone something, avoid you can say. Wither basically we call to avoid, postpone something. Okay. Next question. Manju sir, please create poll for next question. The moment you get flow, चलिए, immediately I'm giving you the questions. Find the meaning. Mark your answers quickly. Fastidious is a very very good word, common word. एसएससी में भी बहुत पूछा जाता है. Quickly guys, only 15 seconds you have. 53 votes, good. You have increased your speed. Fastidious basically we call to, yes, 45% accuracy we have cautious. Person who is extremely careful. Fastidious means a person who is hard to please. Yes. कि देखिए उसी पर्सन को खुश करना मुश्किल हो जाता है जो बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, जो हर माइन्यूट चीजों पे ध्यान देता है. अटेंटिव, वेरी वेरी गुड, very attentive, all these are. A person who is very hard to please, extremely careful, fussy, all these can be the synonyms. All these can be the synonym. Okay. So cautious is this. Correct. B is the correct answer. Next question. Manju sir, please create poll for this question. Sorry, 1 second, guys. This is not question. 1 second. Meticulous. Particular, I will discuss that, Chetna. Later, I will discuss. So, guys, as you know, we have launched Mains Mega Pack. This is a very good plan that you can purchase on Hollywood platform. Okay. FCI AG3 batch we are launching. We have already launched. NABARD batch also we will launch. Okay. Coming weeks से आपका NABARD का भी batch start हो जाएगा. So we have multiple batches running on Hollywood platform. So the best buy plan, as you always know, I say कि banking super elite purchase कर लीजिए because इसमें जो भी upcoming courses है, you will get classes for all these things. Okay. So you will get this banking super elite access में you will get all these classes. Whether it is SBI, whether it is NABARD, uh,
all batches you will get, all the mains classes, everything is included in Banking Super Elite subscription. So please take this subscription. Now, we have today is the last day of this offer. You can say that this offer will end today and 17 September. So since today is the last day of this offer, so those who are interested in joining Oliport platform, so this is the best time for you to buy this course. इसके लिए golden opportunity आप इसको वो कर लेते हैं. Okay. So you can use my code SABA. Yes, अभी आपका poll में option सिर्फ एक ही है, SABA. You can use my code SABA for this. For additional discount. Okay. प्रभात आप 100% डिस्काउंट ले लीजिए. ओके, so you can use my code Sabha for additional discount, additional 5% discount you will get. And those who have not joined my Telegram channel, please join Telegram channel, that is Learn English with Sabha, for PDF of every session and for updates. हर session के update के लिए, PDF के लिए please join this Telegram channel. Okay. So now next question, Manju sir, please create poll for next question. चले guys, quickly. Prevaricate. Read the direction. क्या पूछा गया है ध्यान से देख लीजिएगा. पूछा क्या गया है. हरी अप गाइस, मार्क योर आंसर्स. अभी तक किसी ने नहीं मार्क किया. क्विकली, ओनली 12. Prevaricate. Opposite is asked. 56 votes. D, yes, accuracy. See, prevaricate, the meaning is to avoid the truth. It means to avoid the truth. कि आप जो है truth को avoid करते हैं. You can even say lie, to lie. So prevaricate basically टाल मटोल के बात करना, correct. Indirect usage of word, roundabout way of speaking, ताकि आपको सच ना बोलना पड़े. So that is called prevaricate, to avoid truth, to lie, that is the synonym. Since opposite is asked, see अगर synonym पूछता तो avoid भी कह सकते थे, to lie भी कह सकते थे. But since opposite is asked, so the exact opposite is to speak truth. Exact opposite क्या है? सच बोलना. Yes. Next question. आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन गाइस, बट आप जो है पहले आंसर नहीं दीजिएगा. डोंट राइट द आंसर इन द चैट सेक्शन. ओके, मंजू सर प्लीज क्रिएट पोल फॉर दिस क्वेश्चन. अनदर एक्सेलेंट क्वेश्चन. वेरी सिंपल वर्ड, एक्सेलेंट वर्ड. Hurry up guys, you got enough time. Manju sir, not more than 15 seconds. I will show them the questions first. हाँ, I will ignore particular word. I will ignore. Okay, I will not ignore. I will tell you कि why particular word was not there. But at the end of the session, 54 words, B 35%, C 33%, A 16%, and unfortunately, the correct answer is fate only. लॉट वर्ड कैन ऑल्सो मीन फेट. लॉट का मतलब फेट भी होता है, लक भी होता है. देखिए, लॉट का मतलब आपको अभी तक क्या पता होगा? लॉट्स ऑफ पीपुल, ऑफ पर्सन, राइट. लॉट का मतलब मेनी तो होता ही है, इनन्यूमरेबल मेनी, दैट इज द मीनिंग. बट लॉट वर्ड ऑल्सो कैरीज द सेंस ऑफ फेट. इसका मतलब फेट और आपके फॉर्चुनेट, यस, किस्मत से भी रिलेटेड होता है. सो दिस इज ऑल्सो. फॉली का मतलब होता है मिस्टेक. Folly basically we call to mistake. Yes. Not sensible, insensible. Yes. So folly, it was my folly. Foolishness, not mistake. You can say foolishness. Folly basically we call to foolishness. It was my foolishness. Okay. So folly we call to foolishness. Oath आपको पता है. Okay. So we'll see. So lot basically is what? It is fate. Next, lottery से आप relate कर सकते हैं. Yes, you can relate this word with lottery. Okay. Next question.
Manju sir, please create poll for this question. 15 seconds only. I'm showing them the question. Please create poll for this question. I'm unable. Quickly, guys, mark your answer. 56 votes. These two, yes. Amenable basically we call to yes, willingly to accept, cooperative. So yes, correct answer is agreeable. Yes. Friendly relation, amenable relation. अभी इससे related एक word हमने देखा भी था. Okay. So congenial, amenable, amiable, all these are synonyms. Congenial word अभी भी saw ना. So congenial, amenable, amiable, these all are synonyms. Okay. So yes, accept, happily, agreeable. Very good. Next question. Manju sir, please create poll. This is also a good question. Please create poll for this question. Only 15 seconds. Beset. Quickly, guys. See, there is one word called behest. Behest basically we use for order. Behest basically we use for order. Beset basically we call to affect badly. Behest का मतलब होता है किसी को command देना, order देना, that is called behest. Okay. But beset basically we call to something that affect badly, that is called beset. Correct. Okay. Pertain to plead. Plead means request. You know. Plead का मतलब क्या होता है? Request होता है. Okay. Yes. Next question. Manju sir, please create poll for this question. Hate begets hate. Yes. Yes, beset is a verb. Go through the direction carefully. Quickly mark your answers. और this I have guess कि ये सब लोग कर सकते हैं. It is a simple word. So many are live, but still 50% are only marking their answers. 63 votes, D 39%. Yes, oath means शपथ अतुल. Oath का मतलब होता pledge, शपथ. Yes, sparse basically we call to scanty. Meager, less in number. Okay, बहुत थोड़ा कोई चीज होता है, that is called sparse. So it is synonym. Scanty is synonym. C is the synonym. Okay. So opposite is scanty का मतलब भी होता है थोड़ा, less. Okay. Scanty means less. So scanty is the meaning opposite. Dearth, meager, all these are the synonym. Okay. किसी भी चीज की कमी होती है, स्पार्स का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी. ओके. तो कोई चीज थोड़ा है आपके पास तो दैट इज स्पार्स. अपोजिट पूछा है तो अपोजिट विल बी अबेंडेंट. अबेंडेंट मीन्स प्लेथोरा. Full of something, that is called abundant. Plethora is abundant. Okay. Next question. I hope it is clear to everyone. Yes. Plentiful, plethora, all these means abundant. Plentiful. Tranquil का मतलब होता peace. Tranquil basically we call to peace. Next question, guys. Lassitude is a very very common word. I guess यहाँ पर तो सब लोग मार्क कर सकते हैं आंसर. It is a simple word, lassitude. Yes, skimpy, scanty, all are the synonym of sparse.
positive, so many words we have. Tranquil, peace, correct, god of thunder. Surplus is the opposite. Quickly, guys, mark your answers. We have only 52. Simple lassitude. अच्छा, लस्सी पी के सुस्ती. अच्छा, that इससे lassitude. Very good, Gauri Preti. Lassitude, you know, lethargy. Lassitude basically we call to lacking energy. Okay, so lethargy, sluggish. Lackadaisical, yes. vocab याद करने का तरीका देखिए, लस्सी पी के सुस्ती, तो सुस्ती, that is called. So many words we have. So many words we have that for this. Okay. Now, what is the meaning of Puritan? Puritan means moral, highly moral. Okay. Morally high you can say. कि जिसका moral value बहुत ज्यादा होता है, ethical होता है, तो that is called Puritan. Morally high person. Okay. Indolent you can say. Indolent you can say. So many words we have. Lazy, indolent, lackadaisical, sluggish. So many words we have. Okay. So many words. Now, next question. Manju sir, quickly create the this poll. This is also a good word. वर्ड आराम से देख लीजिए. ही विल क्रिएट द पोल. निमोनिक, यस. लस्सी पी के सुस्ती, सो दैट इज कॉल्ड निमोनिक, यस. This is a good word. Let me see how many of you can mark the correct answer. $55 votes. Be very good. Use. Well done, guys. This is a good word. Yes. Ploy, tactics. Ploy, you can say. Tactics, you can say. Conspiracy, you can say. So all these are the synonyms of the word ruse. Yes, trick, clean. Yes, correct, correct. So yes, the meaning is stratagem. Meaning is stratagem. Okay. Yes, cunning plan. Modeling we call to a person who is very much sentimental. जो बहुत emotionally attached होता है, बहुत sentimental होता है, that person is called modeling. Okay. Rustic we call to rustic people we say. Rustic means rural people के लिए basically ये जो बहुत देसी type के लोग होते हैं ना, देसी that we say. So that person is called rustic. So rural you can say, or this. So this is what rustic word means. Actually, this Manju sir is now facing a power problem, so he won't be able. They have TS, all this you can say. Okay. So Manju's, anyways, now you won't get poll because Manju sir is facing some issue. Okay, power cut issue. So no problem, we won't get poll for this. Okay. फटाफट हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे विदाउट पोल. चलिए नेक्स्ट वर्ड गाइस. यूटोपिया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. नो पोलिंग, गिव योर आंसर्स. 15 seconds, give your answer. Type your answer in the chat section, then I will discuss. तो सब लोग कर सकते हैं. यूटोपिया, what is the meaning of this word? Very good, very good. यूटोपिया का बेसिकली मतलब होता है, यूटोपिया मीन्स इन हिंदी इफ आई से राम राज. यूटोपिया को अगर हिंदी में देखा जाए तो इट मीन्स राम राज्य. ओके. सो एन आइडियल स्टेट, कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जहां पर कोई चोरी बीमारी कुछ भी ना हो, दैट इज परफेक्ट, दैट आइडियल और परफेक्ट स्टेट, दैट इज कॉल्ड. तो ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. दिस यू कैन ओनली इमेजिन, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. ओके. सो परफेक्ट स्टेट इज द मीनिंग. वी से अ यूटोपियन आइडिया. दिस इज एन इडियम, अ यूटोपियन आइडिया. सो समथिंग की मतलब जो सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, इमेजिनरी आइडिया जिसको प्रैक्टिकली फॉलो करना पॉसिबल ना हो. इमेजिनरी आइडिया, दैट इज कॉल्ड. यस. हॉलीडे होम. नेक्स्ट क्वेश्चन. वांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वांट? क्विकली गाइस. VAUNT, want. नेक्स्ट वर्ड. क्विकली प्रोसीड, रैपिड फायर सेशन है, फटाफट करिए. Want, some is really saying C, resign. Lack, no, no. Invincible, D, yes, invincible, you are correct. देखिए सब गेस करेंगे. Want basically we call to praise excessively.
किसी की भी बहुत ज्यादा तारीफ कर देना, दैट इज कॉल्ड वांट, प्रेज एक्सेसिवली. सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड वांट? यस, इट इज बोस्ट, बोस्ट something, boast of something, that is called extol. Yes, so boasting of something, praising excessively. Okay, it can also carry in the same sense of this showing respect. अगर आप किसी दूसरे पर्सन को भी बोस्ट करें, brag of all these. Yes, so it is the meaning of the word want. Yes, next question. Fetid, a good word, fetid. Fetid we call to. Yes, very good. Stinking. Fetid we call to very unpleasant smell. Extremely unpleasant smell is called. This we basically use for smell. So stinking smell, extremely, yes, smelly, very, बहुत गंदी smell जो आती है, that is called fetid. Okay, extremely unpleasant smell is called fetid. सब करा देंगे गॉड ऑफ थंडर, आप तो खुद ही गॉड हैं, आपको क्या कराने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैल्यूटरी. सैल्यूटरी, SALUTARY. सैल्यूटरी, what is the meaning of this word? Obedient? No. Gauri Singh D. Invincible. Yes, it means beneficial. Salutary basically we call to something that has remedial effect. कि जिसका remedial effect होता है, अच्छा effect होता है, औषधि जिसका होता है. So something that is beneficial for your health. So that is called salutary. So D. Okay. Yes, D is the correct answer. Salutary means beneficial, remedial effect. जैसे medicines are salutary. Okay, they are beneficial. Next question. Pester. Pester is a verb. What is the meaning of the word pester? Very good, Sonali. You remember that word. Irritate. Yes. Pester basically we call to vex, annoy or irritate someone. किसी को इरिटेट कर देना. जैसे पेस्ट आपको पता है ना, पेस्ट मतलब क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल वी हैव, कीड़े मकोड़े. पेस्ट वी कॉल टू कीड़े मकोड़े. तो कीड़े मकोड़े आपको क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं. सो पेस्टर वी कॉल टू इरिटेट. यस, इरिटेट, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स. गुड, करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्बाइब. Imbibe, what is the meaning? Yes, it can be Toshit. So now, Manju sir, no worries. Now we don't need poll. We will discuss like this only. Okay. So most of your marked your answers. Manju sir, from next question, don't give. Okay. Poll. Quickly, guys, hurry up. Many are marking the answers. Very good. Actually, he was facing power issue, so that is why he was unable to create the poll. But now I guess we don't need poll for remaining questions. We will do. Okay. 57 words. Be very good. Imbibe basically we call to imbibe good things. It means imbibe knowledge. We say imbibe knowledge, not the meaning I'm saying. We say imbibe knowledge. It means absorb knowledge. Knowledge को absorb कर लेना. Okay, so that is called imbibe, absorb. Very good. Yes, well done. Manju sir, now we don't need pool. Okay, thank you, Manju sir. Yes, absorb something. Knowledge basically in that case we use. Next question, guys. Sycophantic. कितने क्वेश्चंस हुए अभी? इवन आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड. Sycophantic, what is the meaning of this word sycophantic? D, mad? No, I know, I knew. See, it is not that psycho. ये वो psycho, lunatic वाला psycho नहीं है, पागल इसको relate कर दिया. Sycophant, do you know किसको कहते हैं? Sycophant. Sycophant we call to a person who is चापलूस. सैकोफेंट उस पर्सन को कहते हैं जो दूसरे की चापलूसी करता है. ओके, उसे सैकोफेंट कहा जाता है. तो सैकोफेंटिक वी कॉल टू अ पर्सन हु इज सर्वाइल, कि उसके खुद के वैल्यूज नहीं है, सिर्फ दूसरे की चापलूसी में लगा रहता है. दैट इज कॉल्ड यस फ्लैटरर. सैकोफेंट बेसिकली वी कॉल टू फ्लैटरर, अ पर्सन हु फ्लैटर्स. ओके,
यस, प्रेज समवन अपने उसके लिए, ऑयलिंग, बटरिंग, ऑल दीज आर ओके, मस्का मारना। सो मीनिंग इज सर्वाइव, और ये जो साइको होता है ना, PSY, ये आपका ल्यूनेटिक मैट से रिलेटेड होता है। ओके, कजोल, ऑल दीज आर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एरिड? Move on to next word, guys. Yes, arid basically we call to dry land. Acha, here meaning is asked, no? Yes, it can be called barren also. Sorry, guys. A and C both can be synonyms. Dry land, barren land, that is called arid land. Okay. Fertile is the opposite. Fertile is the opposite. Unfertile, yeah, barren also we say. Okay, arid means barren, dry, unfertile land. All these can be called arid. Okay. So fertile is opposite. फैलो वी कॉल टू, फैलो इज ऑल्सो रिलेटेड टू लैंड ओनली, बट फैलो वो लैंड होता है जहां पर जिसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, जहां पे कोई वो ना हो। ओके, सो यस, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिसमैच है, बोथ आर ऑप्शंस, ड्राई एंड बैरन बोथ कैन बी सिनोनिम्स। यस, यस। सी अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो ड्राई इज द एग्जैक्ट वर्ड, बट एरिड लैंड्स कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू बैरन लैंड्स, ओके, अनफर्टाइल लैंड्स। गुड, both are synonym, Anshita, both are synonym. Actually there is a like typo error or whatever you can say. Okay, so both can be synonym between arid and fertile. Next question, fallow भी बेसिकली लैंड को ही कहा जाता है, बट fallow इज द लैंड जिसको पर्पसली कुछ सालों के लिए छोड़ा जाता है, जहां पर कोई कल्टिवेशन नहीं की जाती, सो दैट लैंड गेन्स बैक इट्स फर्टिलिटी, सो दैट इज कॉल्ड fallow लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव फ्रेजल वर्ब, stand for, what does it mean? Phrasal verb, not 2 hours, not 2 hours. Better than other, no, not better than other. Stand for we call to represent, support, किसी को support करना, represent करना, that is called stand for. Okay, better than other is called stand out. If you stand out among others, it means you are better than others. So stand out we call to better than others, represent, support, that is called stand for. Okay, bring off, what is the meaning of this phrase? Bring off, bring off, what is the meaning of this phrase? Yes, bring off means to achieve something. So these are the phrases, phrases भी बहुत important है। achieve something is called bring off, it means accomplish, किसी भी चीज को accomplish कर लेना, किसी भी चीज को achieve कर लेना, that is called bring off। very good, yes, and correct, yes। Next, egg on, what is the meaning of the word egg on? Egg on means hatch। दीज आर फ्रेजल वर्ब्स गाइज, ये फ्रेजल वर्ब्स है, मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया ताकि आप कंफ्यूज हैं, बिकॉज आप एक देखेंगे आप हैचिंग एक्स या लेइंग एक्स लगा देंगे। एग ऑन मींस व्हाट, टू एनकरेज समवन, किसी को बूस्ट अप करना, किसी को एनकरेज करना। एग ऑन मींस व्हाट, टू एनकरेज समवन। ओके, एनकरेज करना किसी को कुछ अचीव करने के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एग ऑन। ओके, नेक्स्ट वर्ड, काउंट ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज काउंट ऑन? Yes, depend on. Count on something means depend on something. Yes, good, good. Penchant. Opposite is asked. What is the opposite of the word penchant? You can count on me. Yes, you can depend upon me. Correct. Penchant. Opposite is asked. Again, you guys are not seeing. Yes, we can always count. You can always count on me. I will never betray you people. See here, opposite is asked. Penchant means fondness. Penchant का मतलब होता है fondness, strong liking, propensity, these all are the synonyms। propensity is synonym, predilection is synonym, ये सारे के सारे synonym है। opposite is asked, so it is, अरे सॉरी, नेकलेस। तो ये आपने पेंडेंट से रिलेट मत कर दीजिएगा, ओके, इसको पेंडेंट कहते हैं, नेकलेस बेसिकली दैट इज पेंडेंट। ओके, सो इट इज अवर्जन, अपोजिट इज आल्सो अवर्जन, रिपग्नेंस,
abhorrence. These are antonym of the word penchant. Correct. Next word, histrionic. Very good word. Histrionic. Yes, aversion, repugnance, all these opposite. Okay. Histrionic means bygone. मुझे पता था यही लगेगा सबका. I knew कि सब यही लगाएंगे. Histrionic we call to very dramatic. अभी ये जो कल गोवा में जो केस हुआ था ना, दैट वाज अ हिस्ट्रियोनिक परफॉर्मेंस. वो हिस्ट्रियोनिक केस था. ओके, ड्रामेटिक था. ओके, ओनली 36 वर्ड्स. ड्रामेटिक, हिस्ट्रियोनिक वी कॉल टू ड्रामेटिक. बायगॉन मींस दैट हैज गॉन. ये हिस्ट्री से रिलेटेड है. बायगॉन वी कॉल टू पास्ट. हिस्ट्रियोनिक का हिस्ट्री से कोई रिलेटेड नहीं है. ओके संदीप. ओके, गुड. So histrionic we call to by dramatic, extremely dramatic drama, that is called histrionic. Bygone we call to something that is related to past. Okay. Next, venial. Quickly. Yes. How you got 60 words, Leo? हो ही नहीं सकता. Venial. Quickly. Very good, Sandeep. See, I knew कि आप लोग कंफ्यूज होंगे ए बी में. See, venal we call to corrupt. Madhurima, venal we call to corrupt. Venal politicians, याद रखिएगा. Venal politicians, always remember this phrase, venal politicians, मतलब corrupt politicians. And venial, basically, it is venial. Venial we call to pardonable. Answer is D. There is a very slight difference. ये सारे differences आपको ध्यान में रखना है. Venial, basically, we call to pardonable, excusable. Venial crime. Venial crime means what? जिसको forgive कर दिया जाए. Pardonable, excusable, forgivable. Don't get confused, guys, because बहुत similar word है. Venal, that is why in option, और जब भी ये आएगा आपको ये option में जरूर दिखेंगे, because they are very similar words. So venal is what? Corrupt. And venial we call to crime. Pardonable, forgivable. Venial crime का मतलब हो गया ऐसी गलती जो आप जिसको माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती ना हो. That can be forgivable. Veneration is respect. सब मिलते जुलते हैं. It's okay, Ravi. Your mistake was venial. Your mistake was venial. Okay. So veneration we call to respect. Clear, everyone? Next question. Diffident, opposite is asked. Don't take from the options, Leo. फिर ऐसे तो हम लोग बहुत सारे words कर चुके होंगे. Diffident, opposite is asked. Opposite is asked. Please read the directions carefully. Synonym नहीं पूछा, opposite पूछा है. So diffident is the opposite of confident. Brave नहीं कहते. देखिए, shy and meek, these are the synonyms. Shy is the synonym, meaning opposite is asked, so it will be confident. Okay, yes, meek and shy are synonyms. Next, idiom. Fatafat, guys, mark these idioms. Mark, what is the meaning of this word? Gall and wormwood. Hard to digest. Gall and wormwood, hard to digest. Gall and wormwood we call to something that is odious, hateful. जिसको देख के मतलब जिसको देख के की सेंस आ जाए कि नहीं इसको देखना ही नहीं है, मतलब hateful something. Loathsome you can say. Okay. So this was guesswork, but all are incorrect. So loathsome, gall and wormwood, that is called odious, hateful. Okay. Answer is B, not hard to digest. खाने वाली चीज नहीं है. खून खौल जाता हो, हाँ, जिसको देख करके, you can say. Next we have rearing. Rearing word we saw in the last vocab session also. Last में भी हमने vocab में देखा था rearing word. What is the meaning of this word rearing? What is the meaning of this word rearing? Yes, very good. Very good. Eager. See, rearing we call to fostering. Very good. Rear मतलब होता fostering. Rearing means fostering, nurturing. ये rear होता है guys. Don't get confused. Rear का मतलब होता है nurturing, fostering, all these things.
रेयर वी कॉल टू ईगर, कीन टू नो समथिंग, किसी भी चीज को जानने के लिए enthusiastic होना, कीन होना, दैट इज कॉल्ड. सो दीज आर गुड वर्ड जो मिलते जुलते हैं, बट स्टिल दोज हु took last marathon, they still remembered. I really like that. Well done, Apurva and Madhurima. Put on. This is also a very good word. Let me see who gives the correct answer. किसके सही आंसर आते हैं? Put on. Yes, Prabhat Ranjan. Good. I knew that you will give the answer, Prabhat. मुझे पता था आप आंसर देंगे. Put on we call to wear. Put on का मतलब आई होप सबको पता होगा wear. तो देखिए आपको put on में कंफ्यूजन नहीं है, आपको इस वर्ड में कंफ्यूजन है. इसको आपने शाहरुख खान वाला डॉन समझ लिया होगा. Don is a verb also that we use in, इसको done बोलते हैं basically, and this we use put on, put off different. Okay, don basically we call to verb, इसका मतलब होता है wear. इसका V2 फॉर्म आपने शायद ये वर्ड कभी ना देखा हो, देख लीजिए donned. The word is D O double N, इसका V2 फॉर्म क्या होता है? D O double N E D, donned. Okay, so this is a very very good word because अगर कहीं आपको ये वर्ड दिख जाएगा तो आप उसे काट देंगे. You will eliminate that. डॉन ये नाउन नहीं है, ये शाहरुख खान वाली मूवी वाला डॉन नहीं है. ये डन बेसिकली करने के लिए, पहनने के लिए भी, वेयर करने के लिए भी यूज करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वियर दी होती तो सबने मार्क कर लिया होता. बट आई हैव गिवन दिस गुड वर्ड, सो यू गॉट टू नो वन मोर गुड वोकैब. ओके, yes, turned in a black dress. Yes, I'm turned in a black dress. I'm turned in a black t-shirt, I can say. So put on, turn. Extinguish we call to put off. Put off का मतलब होता है बुझा देना. Cancel also we sorry, put out is extinguish. Sorry, extremely sorry guys. 1 second. Wait, no, 1 second. Extinguish basically we call to put out. Put out the candle. Okay. And yes, out is extinguish. Please, put out is extinguish. Put off means cancel. Put off का मतलब होता है cancel. Okay. And put with we call to tolerate. These are the three meanings. Okay. Very, very important word. Put is a very important phrasal verb. Put out, put off, cancel, tolerate, put up with. Okay, next question. Take after. Purv, no, no, no. Who gave the answer? Yes, Saurav Naveen. Excellent, guys. Real. Look, take after doesn't mean look after. After से मैच नहीं करिए. इसका मतलब किसी की देखभाल करना नहीं होता. Take after means resemble. I took after my grandmother. I took after my grandmother. It means मैं अपनी grandmother से resemble करती हूँ. So took after we call to resemble. Okay? Yes. Resemble करना, follow वगैरह करना नहीं, किसी से मिलना. मेरी शक्ल जो है मेरी grandmother से मिलती है. So I can say I take after my grandmother. Okay? Yes. C is the correct answer. थोड़ा सा पैटर्न चेंज है फटाफट गाइस. एक बार ना ये vocab सेशन के बाद सारे वर्ड्स को एक बार गो थ्रू करिएगा. यू विल लर्न ऑल बिकॉज ऑल गुड वर्ड्स वी हैव चूजन. AC, imprison and excruciate. No, really saying BC, sorry, D, A. What is the meaning? See, imprison means you know. Imprison का मतलब सबको पता है, torture का मतलब सबको पता है, extract मतलब सबको पता है. What is the meaning of excruciate? Just tell me the meaning, you will get the answer. What is the meaning of the word excruciate? सब guess कर रहे हैं. Excruciate we call to torture. Excruciate का मतलब ही होता है torture, किसी को torture करना, painful. Yes. So BC is the synonym. BC synonym है. So answer is D. Answer is D. BC we call to torture, excruciate. Okay. So that is BC. Severe. Yes, correct. Next. एक सेकेंड गाइस, ये मेरी गलती हो गई. 1 सेकेंड.
नहीं, इसमें आप लोग आंसर सही नहीं दे पाएंगे बिकॉज आई मेड मिस्टेक. Moribund and dying. These two are synonyms. So the correct answer is AD and BC. Moribund basically we call to someone who is on the death bed. जो death bed पर हो उसको moribund कहा जाता है. Okay. And gloomy and morose. Morose also we call to sad. So these two are synonyms. ये BC synonym है and moribund and dying is the synonym. So the correct answer is AD. वो थोड़ा सा mistake हो गया मेरे से. My mistake is venial. Is my mistake venial or venal? Yes, B. AD, BC. AD is the pair synonym. These two are also synonyms and these two are also synonyms. Correct. Venial mistake, forgivable. Please forgive me. Next question. ये तो सब कर लेंगे. Definitely venial. Okay, thank you. Thank you, Sam. ये तो सब कर लेंगे. A, 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 A. Now see, paragon and A, these two are almost synonym. Now listen to me. ये दोनों आपको लगेगा कि पैरागन ऑल्सो वी कॉल टू परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. ओके, एपिटोम परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड. सी, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन देम, अगर आपको इनके बीच में चूज करना होगा, क्विंटेसेंस मींस टिपिकल एग्जाम्पल. Quintessence basically we call to typical example of something. Okay. And epitome means embodiment, the perfect example of something. Almost they are similar, but यहाँ पर थोड़ा सा minute difference आपको देखना पड़ेगा when these two are there in the options. So epitome we call to paragon, मतलब किसी भी चीज का जो perfect example होता है that is called epitome. So even though these two are synonyms, but still you should know the difference. कि quintessence basically we call typical example, archetype you can say, okay, and paragon exact synonym if you talk about the paragon and epitome, these two are synonyms. Okay. Incarnation we call to yes manifestation, embodiment जिसको आप अवतार कहते हैं. Okay. Next question. Opposite is asked here. Opposite is asked here. Opposite, extraneous opposite. पैरागॉन की चप्पल, हाँ वो सबसे बेस्ट चप्पल है. हाँ, सब जाके पैरागॉन खरीद लीजिएगा. B, 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 no. Extraneous basically we call to something that is irrelevant. Something that is external, जो आपके place में fit ना हो. So that is called extraneous, irrelevant, external. So opposite is asked, so it will be relevant. Yes. Opposite is asked, इसका spirit से related नहीं है, relation नहीं है. Extraneous does yes, non-essential, correct. So irrelevant, external, non-essential, that is the meaning. So the opposite will be relevant, pertinent, germane. Okay. These these are extremely good vocabs, guys. Yes, really बहुत अच्छे words हैं. Next, inertia, opposite is asked. Inertia, opposite is asked. B. Only I guess ki hardly 10 questions. Hardly 10 questions, Susan. Okay. Yes, inertia basically we call to sluggishness. Sluggishness, laziness, languor. These two are the synonyms. Endorment, lassitude. अभी हमने बहुत सारे words देखे हैं. No need to repeat all these words. Okay. So the opposite is asked. Opposite will be vigor. Inertness, languor, sluggishness, laziness, all these are synonyms of inertia. ये सारे के सारे inertia के synonym है. In a state of rest, correct. ये सबने आपने देखा होगा उससे. Physics में सबने पढ़ा होगा. Inertia is what? State of rest. So अगर आप active होगा, inactive you can say, dormant you can say, inactive, dormant, all these are the synonyms of inertia. So opposite is asked, so it will be vigor. Vigor means what? Enthusiasm, energetic. Okay, correct. Yes, moment of inertia, correct. Next, decimated.
नेक्स्ट वर्ड डेसिमेटेड। ये सब लोग कर लेंगे। डेसिमेटेड बेसिकली वी कॉल टू डिस्ट्रॉयड। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे मैम डैमेज भी दिया हुआ है। देखिए ये सारे वर्ड ऐसे हैं ना, ये अगर आप एसएससी में जाएंगे, बैंकिंग में तो इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं पूछे जाते। स्टिल लेट मी डिस्कस दिस गाइस। यस, देखिए इतने आपके सिनोनिम्स आपके बैंकिंग में नहीं पूछे जाते हैं, बट एसएससी में आपको दोनों ऑप्शन में दिखेगा। सो डैमेज्ड का मतलब थोड़ा बहुत खराब कर देना, डेसिमेटेड का मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। बोथ आर सिनोनिम बट द एग्जैक्ट डेसिमेटेड का मतलब पूरा तहस नहस कर देना। डैमेज का मतलब क्या, थोड़ा सा आपको, आपकी गाड़ी डैमेज हो गई मतलब थोड़ा सा ठक्कर लग गई। तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा हायर इंटेंसिटी वाला वर्ड है, ओके, और ये ज्यादा इंटेंसिटी वाला वर्ड है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड, गिव द आंसर। हेलो, हेलो। बेगर डिस्क्रिप्शन डजेंट मीन कि दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इसका ये मतलब नहीं होता कि जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद बेगर। इसका ये भी मतलब नहीं कि बेगर, बेगर डिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट की पुअर डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी भी चीज को आप बहुत गंदे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो गंदे तरीके से किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेगर डिस्क्रिप्शन, ओके। सो पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग, पुअर अकाउंट मीन्स व्हाट, पुअर डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड बेगर डिस्क्रिप्शन, ओके। नाउ लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन, इसके बाद होमवर्क। बीच में मैंने माइक हटाया था, आई गॉट वन कॉल, सो दैट इज वाई अब आपको आवाज आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिवाइल? REVILE। C yes, revile basically we call to criticize, criticize, censure, okay, all these are the synonym। किसी को मतलब बहुत बुरी तरह से criticize कर देना, attack कर देना, that is called revile। So the meaning will be abuse। Yes, criticize, censure, abuse, okay। Now remaining words we have homework, one homework, two homework, three homework, ज्यादा नहीं होगा, four homework। Please mark the answers, question number, answer। fifth homework, sixth homework, सेवेंथ होमवर्क, कितने वर्ड्स हो गए, 10 से ज्यादा है क्या? एट्थ होमवर्क, नाइन्थ होमवर्क, 10th homework। 10 questions, 50 words we did, and these 10 questions you have homework, okay। 10 questions you will have homework। Please mark your answers। Answer जरूर दीजिएगा comment section में, I will do the correction। Options are very simple, you will get the answer, but please mark the answers, okay। So 10 questions you have homework, 50 we did। Thank you guys, thank you everyone। Tomorrow I can't promise, but yes I will bring more vocab sessions, okay। vocab के session और लेकर के आऊंगी, अच्छे all good words I will bring। So thank you guys, thank you everyone। Please like this session, share this session, very very important, okay। Please like this session and share this session।